Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we will going to do our practical number 9, which is related to buffet service. So let's begin. You must be aware of the types of services we have done in our theory class. Uh, Today we will be focusing on one type of meal service, which is buffet. A buffet is a system of serving meals in which food is placed in a public area where the diners, जो कि हम होते हैं, generally serve themselves. Like in our wedding functions, in parties, जहाँ पे food serve होता है, dishes line से पड़ी होती हैं, and we are supposed to get up and have our food on our own. फिर उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो बुफे सर्विस है उसमें उसके क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, या कितनी तरह की सर्विसेज होती हैं. तो लेट्स सी कि जो टाइप्स ऑफ बुफे सर्विस है यूजुअली 3 होती हैं: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. जो फॉर्मल बुफे सर्विस है it is usually applicable for weddings, and they are among the large gatherings जिसमें large number of people होते हैं, usually more than 50. और इसका जो बुफे टेबल होता है that may be 20 to 30 feet long. और उसमें भी जो है हमारे पास नंबर ऑफ फूड्स, ऑल कोर्सेज आर इन्वॉल्व यूजुअली, जो भी हमने 4 कोर्सेज अपने डिटेल में हमने पढ़े हुए. Again, 2 or 3 tables may be used to hold different types of foods, जिसमें salads हो सकते हैं, desserts हो सकते हैं, bread और beverages वगैरह. और यूजुअली इस सर्विस में हमें वेटर्स की ज़रूरत होती है. वेटर्स की ज़रूरत इतनी होती है कि वो हमें प्लेट्स सर्व कर सकें, या मे बी एट द स्टार्टिंग हमें वो बेवरेजेस या एपेटाइजर्स जो हैं वो हमारी सीट्स पे आके सर्व कर सकें. जो कटलरी होती है, नैपकिन्स हैं, ग्लासवेयर, वो यूजुअली टेबल पे प्लेस होते हैं जहाँ पे बैठ के डाइन इन करना होता है पीपल ने यूजुअली. फिर उसके बाद गेस्ट मे कम टू द बुफे टेबल फॉर सम ऑफ द फूड. जो एपेटाइजर्स हैं अगर वो टेबल पे सर्व हो जाते हैं तो मेन मील के लिए दे हैव टू गो टू द टेबल, मेन टेबल, टू गेट द फूड. So let's see what's the another type of buffet, which is semi-formal buffet, and it is also applicable in the large number of people, जहाँ पे बड़ी पार्टीज होती हैं. और इस सर्विस में जो है वो फूड जो है वो होस्टेस, यानी जहाँ पे जिस यहाँ जिनके पास हम इनवाइट होते हैं, या कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जो है वो उस फूड सर्विस में सर्व कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है. उसमें वेटर्स का होना ज़रूरी नहीं होता. और जो फूड है वो मेन टेबल पे रखा जाता है, और जो गेस्ट हैं वो अपने नैपकिन्स, कटलरी, प्लेट्स वगैरह वो मे बी दे माइट बी सर्व्ड ऑन अ डिफरेंट टेबल जहाँ से वो खुद लेके अपना सेल्फ सर्व करते हैं. The third type is informal buffet, which is organized between the small number of people, जो हमारी small parties होती हैं. और informal buffet में जो है usually 20 to 25 लोगों के दरमियान होती है, जिसमें फ्रेंड्स, फैमिली और क्लोज मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फैमिली के. And it is suitable where there is not enough clear space or there is no fixed time for the guest to arrive. Since it is informal buffet, the guests help themselves to all the food and may even help with preparation of the food. The food and cutlery can be placed on the same table when guests are invited, or may carry the dish to each guest. जो same table means that जहाँ पे food serve हुआ होता है. The flatware can be placed on the sideboard or side table with the glasses of water if there is no space on the main table. Dessert can be served individually or can be placed on side table or main table after the main meal is cleared off from the table. So this is, you can see, a very flexible kind of service जहाँ पे जो guest हैं they may get involved in preparation of the food, they may be able to get up and get their food from the main table जहाँ पे cutlery और flatwares जो हैं वहीं पे प्लेस किए होते हैं. और अगर
जस्ट सपोज बिकॉज गैदरिंग स्मॉल होती है तो मे बी बहुत लॉन्ग टेबल्स अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से साइड बोर्ड्स जो है वो रेडी कर दिए जाते हैं, या साइड टेबल्स जहाँ पे सेपरेट टेबल्स जहाँ पे कटलरी रख दी जाती है, एंड समटाइम्स डिजर्ट रख दिया जाता है. प्लानिंग द बुफे मील. This is actually one of the your projects जो कि हम क्लास से प्लान करवाते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है in the class. So here we are going to see some rules for planning the menu that should be observed, ताकि हमारा जो बुफे की मील है वो अट्रैक्टिव हो, वो कंप्लीट मील हो, वो कहीं से उसकी डेफिशिएंट ना हो किसी फूड ग्रुप से, या कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड कलर्स एंड ऑल दैट. First of all, we should keep in mind that we should have some dishes that can be prepared in a day advance, because there is always a chance of not getting an opportunity to make the food. जैसे desserts हैं, desserts जो कि summers में serve किए जाते हैं ज़्यादातर, they are eaten chilled. तो आप उनको एडवांस में बना सकते हैं, या केक की बेकिंग आप एडवांस में कर सकते हैं, या पुडिंग आप प्रिपेयर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, दैट कैन बी ईटन द नेक्स्ट डे. या आप किसी फूड की प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी को पार बॉईल करना है या किसी को हाफ कुक करके रखना है, तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू प्लान द फूड बिफोर द एक्चुअल बुफे डे जिसमें आपने मेजरली कुकिंग करनी है. फिर ये कि कैपेसिटी हमारी ओवन की क्या है, उसकी उसकी जो लेंथ की कुकिंग लेंथ है वो कितनी है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है. इवन ऑल द अप्लायंसेस विच यू आर प्लानिंग टू यूज फॉर द बुफे मील शुड बी चेक्ड बिफोर. इवन हम आप लोगों को जब लैब में भी कॉलेज में ये practical करवाते हैं, we always ask the students to come to the lab and check the availability and the working of the particular appliances जो उनको need होती है. You should know what your guests prefer to have the food. ठीक है. फर्ज करें कि अगर आपकी गैदरिंग ऐसी है जिसमें ज़्यादातर मीट ईटर्स हैं, जिसमें people don't like to have veggies much, then you have to prepare the food and plan the food according to their likes and dislikes. Maybe जैसे most of us does not like to have seafood. फिश की जो है वो हमें sometimes उसकी उसकी जो acceptance है, taste buds हम सबके बहुत ज़्यादा develop नहीं हुए. So maybe you can have something else instead of seafood. And there are some gatherings यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं they may be seafood lover, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा items रख सकते हैं food के. अच्छा, फिर उसके बाद you should see that you should avoid the dishes which have the same consistency or same texture. सभी सेम हो जाए, crispiness और उसकी जो sauciness है या कितना dry है, they should have a good combination of food. और फिर उसके बाद जो है you should know the capacity of your work also, कि आप उस दिन में कितना काम कर सकते हैं. अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उस डे में you can make, if you can make 4 dishes, then you should plan accordingly. अगर आपकी कैपेसिटी 3 dishes की है तो आपको वो मतलब जो एक डिश है जो आप एक्स्ट्रा कुक करेंगे, इट मे बी you may omit that dish. Now, setting the buffet table. बुफे को प्लान करना, उसको कुक करना एंड उसकी बजटिंग करना इज अ पार्ट 1 जो कि हमने प्लानिंग में कर लिया. नाउ इज द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर फूड, और आपका फूड प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, और वो आपने किसमें करना होता है, अपने जो बुफे टेबल है उस पे. सबसे पहले we should make sure that we have an enough space for the food to be served on the table. The buffet table should be covered with a clean cloth. It may remain bare if it partially covered with runners, mats to introduce color. बिल्कुल bare table पे हम food नहीं place करते. फिर उसके बाद we should make sure that the cloth should extend halfway to floor or further.
and the napkins that should be provided should be minimum of 18 inches. Some floral or other decoration piece that may be taller and larger in the scale on the buffet than the conventional dining table should be placed in the center. You may use 10.5 to 12 inches dinner plate for the buffet meal when the plate must accommodate all the food of the main course. What is the concept of buffet meal? That the guest goes to the table और वो अपनी प्लेट में हर फूड जो है वो प्लेस करता है और फिर वो आके अपनी सीट पे बैठ के उसको ईट करता है या दैट डाइनर में लाइक टू ईट द फूड वाइल स्टैंडिंग तो जो प्लेट का साइज है वो बड़ा मैटर करता है इसीलिए एक साइज आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है कि इससे ज्यादा जो प्लेट है वो छोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट शुड accommodate all food. Group 2 or 3 dishes of the meal around the stacked plates or align them depending on the dimensions of the buffet. Arrange them in decreasing order of importance in the meal. ये जो point है ये emphasize कर रहा है basically जो हमने आपको meal मेन्यू राइटिंग के जो हमने आपको सीक्वेंस बताया था जिसमें आपका मेन कोर्स जो है वो नंबर 1 पे आता है तो उसके बाद मेन कोर्स है साइड डिश है फिर उसके बाद कंपेनमेंट्स हैं तो इट इज बेटर दैट यू सेट द टेबल अकॉर्डिंग टू द importance of the meal, preference of the diners probably. Okay. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने द प्लेसमेंट आप उसकी क्या कर रहे हैं फॉर द बेस्ट अपीयरेंस ऑफ द बुफे टेबल यू शुड लिमिट द नंबर ऑफ प्लेट्स नैपकिन्स एंड सिल्वरवेयर ऑन द टेबल एडिशनल टेबल शुड बी सेट नियर द बुफे टेबल इफ इट इज नेसेसरी Okay, the other rules are that we should keep in mind the food we are serving should be folk friendly. ऐसे फूड्स हमने नहीं देने जो क्योंकि यूजुअली जो बुफे होता है वो आप दे सम इन सम बुफे द टेबल्स एंड चेयर्स आर नॉट प्रोवाइडेड लोग खड़े होकर ही खाते हैं तो फूड ऐसा सर्व होना चाहिए जो कि अगर एक फोक या स्पून यूज कर रहे हैं तो एक हाथ से अगर प्लेट होल्ड की हुई है दैट कैन बी ईटन विद वन हैंड and the amount of the food should be enough that if the people want to take the second helping तो वो food ले सकें ऐसा ना हो कि first serving में ही जो है वो food जो है वो trays से खत्म हो जाए फिर उसके बाद द केयर शुड बी टेकन कि जो फ्लैटवेयर्स हैं जिसमें हमारे पास प्लेट्स हैं नैपकिन्स हैं और हमारे फोक है स्पून है वो बुफे सेटिंग में ऐसे प्लेस करने चाहिए कि वो पहले जो डाइनर्स हैं वो फूड को ले लें अपनी प्लेट्स में एंड देन लेटर ऑन दे कैन हैव द फ्लैटवेयर्स एंड napkins maybe at the other end of the table and you should never make the flatware the center of interest और कभी भी हम जो बुफे के जो टेबल सेटिंग होती है उसमें हम फ्लैटवेयर्स को जो है वो नैपकिन के अंदर इनक्लोज करके नहीं रखते then the glasses of water should be placed on a tray and that tray should be the last item on the buffet setting or it may be placed on another table if there is not enough space on the main buffet table. Also, the dessert can be placed on the separate table. The dessert plates should be at the right of the dessert because service is more convenient from left to right. Another point is the table appointments must be easy to remove and easy to handle. बहुत ज़्यादा हेवी प्लेट्स बहुत ज़्यादा फैंसी हेवी कटलरी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले ऐसे ग्लास जो कि होल्ड करना मुश्किल है should be avoided to keep on the table. The soiled empty plates should not be collected in the same buffet table. Instead, a side table should be provided for the soiled plates. ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपकी टेबल सेटिंग के लिए आपको कंसिडर करने होते हैं और these are the important rules that should be followed while you are planning and then setting the table.
Students, here are some pictures of buffet table. मेरे previous sections की हैं that I would like to share with you so that you can have a idea how the buffet service have been conducted. जिसमें आप देख सकते हैं very left hand side पे जो है menu card है and the dishes are main dishes are going to be started from the left hand side जिसमें मेन डिश है फिर उसके बाद साइड डिश है देन अकम्पेनमेंट है salads there's a vase this is another picture जिसमें along the wall table set हुआ है left hand side से main dishes start हुई हैं and this is the right most side of the table जहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे आपको explain किया था कि at the end of the table the flatware can be placed and napkins can be placed. This is another example which I have told you in table setting. एक side table provide किया गया है जिसमें beverage रखा गया है and also the dessert is served on a separate table. This is another example जहाँ पे आप देख सकते हैं table setting. यहाँ पे आप देखें कि very beginning at the beginning there are plates stacked and stacking over there with the menu card and the main dish is being started from the left hand side and the then the side dish, the accompaniment, the cutlery and all that, the serving plates as well. Sorry, serving spoons as well. This is also one of the examples. Here in this lab, the two tables were provided. पहले table पे main table पे आप देखेंगे उसी तरह से main buffet serve किया गया. In the second picture, you can see there is a separate table provided with the beverages and the dessert. So that is all for your buffet service. Here is the assignment. You have to plan and make a semi-formal buffet lunch menu for 10 persons and then you have to make a graph showing the table setting of that menu. मैंने आपको pictures दिखाएं. You can have an idea. आप अपना पहले मुझसे menu approve करवाएं और फिर आप उसको ग्राफ में ड्रॉ करें कि आपका जो है बुफे टेबल वो किस तरह से सेट हो सकता है. थैंक यू.